Hello everyone. Good evening. We'll start the class in next 2 minutes. Good evening, ma'am. Good evening, Abhishek. Okay everyone, let's begin with today's class. So today's class topic is solar radiation, heat budget and temperature distribution. इसमें हम ये देखेंगे कि कितनी हीट अर्थ को आती है डायरेक्ट फ्रॉम द सन, कितनी हीट जो है पास हो जाती है, हीट बजट मेंटेन कैसे रहता है एंड उस हीट बजट की वजह से टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे मेंटेन रहता है ऑन द अर्थ सरफेस. So first we'll discuss solar radiation. So let's begin from the source, the sun. We all know sun is the source of this energy. So everything in climatology, it starts from how sun's energy reaches earth. The sun passes these incoming solar radiations. And what does this term insolation means? Insolation means incoming solar radiation. This is insolation, incoming solar radiation. So it's the short wave energy received from the sun. यानी कि अर्थ के सरफेस पे सन से जो एनर्जी आ रही है दैट इज शॉर्ट वेव एनर्जी. ये जो रेडिएशन है इट ड्राइव्स टेम्परेचर, प्रेशर बेल्ट्स, विंड, रेनफॉल, ओशन करंट्स, द एंटायर क्लाइमेट सिस्टम. So everything on earth, what is happening on earth, the temperature distribution, pressure belt, wind system, rainfall, ocean currents, this entire climate system depends on the insolation, that is the incoming solar radiation. So now what's the nature of this solar radiation? It contains electromagnetic waves. याद रखना है इट्स शॉर्ट वेव एनर्जी अर्थ इसको रिसीव करती है एंड इट कंटेन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिसमें 47% विजिबल लाइट होती है एंड 45% इंफ्रारेड लाइट होती है, 8% अल्ट्रावायलेट लाइट होती है एंड इट ट्रेवल्स थ्रू स्पेस बाय रेडिएशन. इट मींस इसको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है. इज इट क्लियर? So next is what are the factors which affect this insolation? What is insolation? Form क्या है? Sun as the source of energy. Energy is received as electromagnetic waves.
Now, what are the factors affecting insolation? First and the foremost factor is latitude. Latituड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर. इक्वेटर के ऊपर जो सनरेज है वो परपेंडिकुलर होती है, तो हाई एनर्जी रिसीव होती है. डायरेक्ट सनरेज जो है वो इक्वेटर की तरफ आती है, दे आर परपेंडिकुलर, सो हाई एनर्जी इज रिसीव्ड एट इक्वेटर. उसका अपोजिट होता है पोल्स पे, क्योंकि रेज जो है दे बिकेम स्लैंटिंग. नाउ द एनर्जी स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया, सो देयर इज लेस हीटिंग एट द पोल्स. Secondly, the duration of the day also matters. Longer day means more time to receive heat, and summer के अंदर high latitude regions जो हैं they have very long days. It means high insolation is received on those days. Now, the sun and the earth distances also matter. Perihelion is the term जब earth is closest to the sun, that is on January 3, and aphelion July 3 को होता है. It's the term which is used for calculating the distance between earth and sun when they are farthest from each other. बट ये जो चेंजेस है इसमें जो इफेक्ट नजर आएगा ड्यू टू पेरिलियन एंड एफिलियन ऑन द अर्थ सरफेस, इट विल बी वेरी मिनिमल और स्मॉल, बिकॉज अर्थ जो एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब एंड रिफ्लेक्ट कर देता है रेडिएशन को यूनिफॉर्मली, एंड बहुत सारे फैक्टर्स बाकी के लाइक क्लाउड्स, रेनफॉल, एवरीथिंग इम्पैक्ट्स इट, सो इफेक्ट ऑफ सन अर्थ डिस्टेंस इज वेरी मिनिमल. नेक्स्ट इज एटमॉस्फेरिक ट्रांसपेरेंसी. नाउ क्लाउड रिफ्लेक्ट्स बैक most of the sunlight. Dust, smoke, aerosol, scatter sunlight, लेस हीटिंग होती है उसकी वजह से. उसके बाद ओजोन भी एब्जॉर्ब कर लेता है यूवी रेज को. सो क्लीन एयर, इट मींस मोर सोलर रेडिएशन विल रीच टू द ग्राउंड. नेक्स्ट, एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल ऑफ इंसिडेंस डिटरमाइन करता है इंटेंसिटी ऑफ द सोलर रेडिएशन. अगर हाई एंगल होगा इट मीन्स द कंसंट्रेशन विल बी मोर, सो द प्लेस विल बी मोर हॉटर, मोर हीट विल बी एब्जॉर्ब्ड. और अगर लो एंगल होगा तो कंसंट्रेशन विल बी लो. देन द एल्बेडो इफेक्ट, दैट इज द रिफ्लेक्टिविटी. Now, how high albedo surfaces like snow, ice, they reflect more heat, which means there will be low temperature. And low albedo surfaces like ocean, forest, they absorb more heat. It means that the temperature will be higher. Then land water contrast. लैंड जो है वो हीट अप हो जाता है क्विकली, एंड वाटर हीट और हीट अप होता है स्लोली, एंड कूल भी होता है slowly. So this impact local insolation absorption. So what are the factors? Let's again quickly revise them. Angle of sun rays. Direct rays हुई लो latitude पर, it means more energy, यानी कि इक्वेटर पर जो है ज्यादा एनर्जी रिसीव होगी, डायरेक्ट रेज आ रही है. ऑब्लिक और स्लैंट रेज लेस एनर्जी होगी, दैट हैपेंस ऑन द हाई latitude. It means pole receive the least sun rays. Duration of the day. Longer days, it means more insolation. Daytime में ज्यादा sunlight receive होती है. High latitudes जो है they show maximum seasonal variations. Now, distance between Earth and Sun. Earth is closest to the Sun on 3 January. Perihelion is a term for that. And farthest on 4th July, aphelion. It means यहाँ पर जो insolation receive होगा that will be minimal, and यहाँ पर maximum insolation will be received. Sunlight will be received on that day. But इसका effect जो है काफी minor होता है, minimal होता है due to atmospherical changes and variation plus cloud cover की वजह से. Now, the transparency of atmosphere. That is also one of the factors that affect the insolation. Clouds, dust particle, gas absorption, scattering sunlight, all this play an important role. Then dense clouds जो हैं वो insolation को reduce कर देते हैं. Then the albedo effect, that is the reflectivity. High albedo surfaces like snow and ice, they reflect more heat. It means there will be low temperature. On the other hand, low albedo surfaces like ocean, they absorb more heat. Now, the albedo of the snow. मैम एक बार रिपीट करेंगे? मैम एक बार रिपीट करेंगे? Yes, sure. High albedo surfaces like snow and ice, their albedo is around 85 to 90%. That is, they reflect more heat. So there will be low temperature. Like polar regions में low temperature क्यों? Because the reflectivity is so high, 90% of the rays are reflected back. And then low albedo surface, उसका vice versa. Ocean and forest, they absorb more heat.
सो फॉरेस्ट का एल्बेडो इज अराउंड 10 to 20%. इट मीन्स 90% जो है सनलाइट जो है इट इज एब्जॉर्ब, 10 to 20% ही जो है वापस रिफ्लेक्ट हो रही है. एंड ओशन का एल्बेडो इज 5 to 15%. सो हाई हेलो, एल्बेडो होगा, इट मीन्स लेस इसी एब्जॉर्प्शन. नंबर पे शेयर करता हूँ ओनर का नंबर. जी जी जी. ओके मैम. You can even note this down. Is it clear? Let's move to next topic, that is heat budget. अभी हमें ये पता चल गया कि क्या फैक्टर्स इंसोलेशन को करते हैं. अब जो है इट मींस पोल पर जो है कम सन रेज आएंगी और इक्वेटर पर ज्यादा सन रेज आएगी. बट दैट विल लीड टू लाइक इन बहुत अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होगा यहाँ पे सनलाइट का. सो किस तरीके से हीट बजट को मेंटेन किया जाता है अर्थ के एटमॉस्फेयर पर इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, बैलेंस रखने के लिए बिटवीन इनकमिंग एंड द आउटकमिंग रेडिएशन. So, to understand climate, we must understand this very simple idea that Earth receives heat from the sun and loses heat to the space. यानी कि अर्थ जो है इट इज उसको सनलाइट डायरेक्ट सन से आ रही है एंड इट लॉसेस हीट टू द स्पेस. अब ये तो चीजें अगर बैलेंस्ड हैं तो क्लाइमेट विल रिमेन स्टेबल. नाउ थिंक कि अर्थ को जो है रिसीव हो रहा है एनर्जी इन 100 यूनिट्स फ्रॉम द सन. सो इफ 100 यूनिट इनकमिंग सोलर रेडिएशन इज 100%, सो उसमें ओनली 31% इज रिफ्लेक्टेड बैक. इट मीन्स इट डज नॉट हीट अर्थ. इसमें 27% is lost, is reflected by clouds, 2% is reflected by atmosphere, 2% by the surface. These are called planetary albedo. By surface से अगर reflect हो रहा है तो that is planetary albedo. Now 69% of the energy received from the sun, the insolation is absorbed, out of which 20% is absorbed by the atmosphere and 49% is absorbed by the earth surface. It means 69% is what? The heat the earth. 100% में से सिर्फ और सिर्फ 69% is the insolation which heats the earth surface. Now again जो है वो lost हो जाता है कंडेंसेशन, लेटेंट हीट से एंड लॉन्ग वेव रेडिएशन से. अर्थ रिसीव करती है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव एंड देन गिव्स बैक और रिफ्लेक्ट एनर्जी बैक इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशंस. We'll discuss this. 100 units enter the earth atmosphere, lost by reflection albedo से, reflected by cloud, then atmosphere reflect करता है, then reflected by earth surface. Total reflection होता है 31%. Then absorbed by the system, absorbed by clouds कितने absorb कर लेते हैं और atmosphere precisely 20% and earth surface absorbs 49%. So total absorption होता है 69%. That is 69% is what heats the earth system. Now terrestrial radiation. After heating up during the day when sun was up, this energy is absorbed. Now at night earth releases its heat, but earth does not emit short waves, it emits long wave infrared radiations. So what happens to this long wave heat? Part of it escapes into the space and part of it is absorbed by the greenhouse gases. It means जब अर्थ जो है वो वापस एनर्जी रिलीज करता है एट नाइट टू दिस, तो उसमें से कुछ पार्ट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है स्पेस के अंदर एंड देन सम पार्ट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ग्रीन हाउस गैसेस. मेजर ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी है? वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, nitrous oxide, ozone, CFCs. So these gases trap heat like a blanket. This is the greenhouse gas effect. So it's good. This natural greenhouse gas is good because it keeps Earth at 15 degrees Celsius, and enhanced greenhouse gas is bad because it leads to global warming. So greenhouse gases are water vapor, carbon dioxide, methane, nitrous oxide, ozone, and chlorofluorocarbons.
These gas trap heat, अब अर्थ ने जो रिफ्लेक्ट किया है हीट को, वो ये गैसेस ट्रैप कर लेती हैं. दिस इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट. इट्स लाइक अ ब्लैंकेट ओवर द अर्थ, जो अर्थ का एक मिनिमल टेम्परेचर दैट इज 15 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करता है. अगर ये टेम्परेचर इंक्रीज होता है, लाइक CO2 के वेरिएशंस की वजह से दिस विल इंक्रीज, तो इट मीन्स जो है अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा. इट देयर विल बी मोर हीट ऑन अर्थ, which over the time led to global warming. So this is how Earth maintains its balance. Now heat transfer कैसे होता है एटमॉस्फेयर के अंदर? There are simply 3 ways जिसकी वजह से heat travel करता है in the atmosphere. First is condensation. Now here the heat is transferred by contact, only the lower layer. This lower layer of the heat is heated by conduction. Then convection. Convection में क्या होता है? Warm air rises and the cool air जो है वो sink करता है. It causes clouds, storms and rainfall. Like hot air balloon rise करता है because of the convection, क्योंकि वो जो है warmer air जो है वो rise करती है. Then advection. Advection में क्या होता है कि horizontal heat is transferred by wind. This moving heat is transferred by the wind from place to place. Hot wind, that is Lu, or cold wind, Mistrals, are some of its example of advection. So, 3 processes हैं: conduction, convection and advection. Conduction में heat is transferred by contact and ये जो है lowest layer पर ही को देखने को मिलता है. Convection में warm air rises and the cool air sink करता है. It causes clouds, storm and rainfalls. And जैसे hot air balloon जो है rise करता है because of the warm air. And then advection. Advection is the horizontal transfer of the heat, just like Lu or Mistral. These are some of its examples. Chinook is also one of its example. So अभी तक we just discussed what is insolation, incoming solar radiations क्या है, how the forms of solar energy क्या है, sun is the source of all the energy, factors क्या है जो control करते हैं insolation को, that is angle of sun rays, duration of the day, distance between earth and sun, transparency of the atmosphere और albedo effect. Then heat budget हमने discuss किया, how the heat is divided on earth. इनकमिंग सोलर रेडिएशंस जो है 100 यूनिट्स में लेकर उसको रखा, किस तरीके से 100 यूनिट्स यूज होती है. मोस्ट ऑफ द पार्ट इज लॉस्ट बाय रिफ्लेक्शन एंड देन मोस्ट ऑफ द पार्ट एब्जॉर्ब्ड बाय एटमॉस्फेयर एंड एब्जॉर्ब्ड बाय अर्थ सरफेस. देन टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस की किस तरीके से जो है एमिट होता है, व्हाट इज ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, व्हाट इज ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट कौन सी है, एंड हीट ट्रांसफर कैसे होता है एटमॉस्फेयर में. 3 processes: conduction, convection and advection. Next topic is temperature. Temperature, the most basic element. Temperature simply means how hot or cold the air is. Now, इसके कुछ important terms we use every day is this: what is the maximum temperature, minimum temperature, what's the daily range of temperature, annual range, mean temperature, all these terms. Now, what are the factors that control the temperature distribution? Temperature is nothing but just how hot or cold the air is, and what makes this air hot and cold. क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को. कुछ एरियाज जो है वो काफी कोल्ड होते हैं, सम एरियाज आर रियली हॉट. तो ये किस तरीके से जो है चीजें होती है, टेम्परेचर में इतने वेरिएशंस क्यों हैं? इट्स बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स. फर्स्ट इज लैटिट्यूड. इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर. इक्वेटर जो है इट्स हॉटेस्ट. इक्वेटर पर टेम्परेचर जो है इट्स हाई बिकॉज ऑफ डायरेक्ट सन रेज. नाउ पोल्स दे आर कोल्डेस्ट बिकॉज ऑफ द slanting rays. If it's earth, equator पर direct sunlight आ रही.
यहाँ पे सनलाइट आ रही है, देन लुक एट द एंगल, तो डायरेक्ट सनलाइट इज नॉट पॉसिबल, स्लैंटिंग रेज यहाँ पर पहुंच पाती है। नेक्स्ट इज द लैंड वाटर कॉन्ट्रास्ट। नाउ लैंड जो है वो हीट करता है एंड कूल करता है वेरी फास्ट, जबकि वाटर जो है इट हीट्स एंड कूल्स वेरी स्लो। इट लीड्स टू कॉन्टिनेंटल एंड मैरीटाइम climates. In the climates of the world, we have to discuss all the continental and maritime climate types. So it's important to understand that land heats and cools faster. On the other hand, water heats and cools slowly. Now, altitude. टेम्परेचर, yesterday we just saw कि टेम्परेचर जो है डिक्रीज करता है विद हाइट, एंड हाउ मच इट डिक्रीजेस 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर, एंड दिस इज द लैप्स रेट. Lapse rate is what? The decrease in the temperature with the height, that is 6.5 degrees Celsius per 1000 meter. Next, ocean currents are one of the important factor which determine the temperature distribution. So warm currents led to increase in the temperature. On the other hand, cold currents led to decrease in the temperature. For example, Western Europe जो है it stays warm due to Gulf Stream. Now Gulf streams are warm currents. Then clouds. मैम Clouds, yes. मैम ये ओशन करंट्स होता क्या है, लाइक व्हाट आर दीज थिंग्स मैम, कैन यू जस्ट इलैबोरेट अ बिट ऑन दिस? On ocean currents. Yes ma'am, Okay. like yeah, like I'm not very clear on this topic, so ma'am just kindly Oh elaborate no. more. Okay. Oh, no problem. Ocean currents are just the large scale and continuous movement of the ocean water from one place to another. यानी कि वेव के फॉर्म में जब वाटर मूव कर रहा है, इट्स जस्ट द कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. Very simple definition. Okay ma'am. Do you want to know more reasons? Because we are going to discuss it अभी oceanography में in a few days. No issues ma'am, you please continue this further, I just asked. Okay, so is it clear that currents are nothing but the large scale continuous movement of the ocean water from one place to another, and they act like river inside the oceans. जैसे river flow करती है in wavy forms, they are the same thing. They transport heat. ये एक एरिया से दूसरे एरिया में हीट को भी ट्रांसफर करती है, एनर्जी ट्रांसफर करती है अक्रॉस द ग्लोब. Where were the ocean currents? मैडम ओशन करंट्स एंड वेव्स में क्या डिफरेंस हो सकता है? Difference between waves and ocean currents. यस मैडम. Let's see. Ocean currents जो है, it's the what can we say? It's a large scale movement, continuous horizontal movement of ocean water. ठीक है, they transport water from one place to another, from one region to another. जबकि waves जो है, they are just up and down movement of water. ओके. Okay, and they do not transport water horizontally. It's just the movement हो रहा है. But then when this movement take place, they continuously होता रहता है movement. This is ocean current. ओके मैम. Waves are simply the up and down movement. They do not transport water horizontally. सिर्फ energy transfer करते हैं. जबकि ocean currents जो है, they are the continuous horizontal movement. ओके. And उनके जो factors हैं, like causes जो हैं of the waves and the ocean currents, they are very different. मूवमेंट कैसे होता है ये ओशनोग्राफी में पूरा हम डिटेल में इसको कवर करेंगे. उसका डेप्थ कितना होता है, स्पीड कितना होता है, मूवमेंट इम्पैक्ट्स क्या होते हैं, ये सब चीजें वी आर गोइंग टू डिस्कस आफ्टर फ्यू डेज इन ओशनोग्राफी. सो डोंट वरी अबाउट इट. अभी के लिए जस्ट अंडरस्टैंड ओशन करंट क्या होता है, वेव्स क्या है. दे आर जस्ट सिंपली द अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ वाटर एंड दे डू नॉट ट्रांसफर वाटर हॉरिजॉन्टली. जबकि ओशन करंट्स जो है, they are the large scale, they are the continuous horizontal movement of ocean water, and they transfer water heat from one region to another. ओके. थैंक यू सो मच मैडम. You're welcome. Okay, where are we? Ocean currents, factors affecting.
Sorry, my mic was off. Yes. Ocean currents, warmer currents जो है they increase the temperature, while on the other hand colder currents decrease the temperature. Clouds जो है डे टाइम पे they reduce heating because they reflect the sunlight, and at night they reduce cooling because at that time they trap the radiations. Then the wind pattern, wind carry करता है temperature from where they come. That is, ये temperature characteristics जो bring करता है from their source region. अगर जो है wind colder region से आ रही है, that will bring cool air with it. अगर warmer region से wind flow कर रही है, तो it will bring warm air with it. Now slope and aspects. South facing slopes जो है, they are in like in northern hemisphere, they are warmer compared to the north facing. नाउ अभी अभी हमने इसका एक ब्रीफ वो देखा था, हीट बजट कैसे मेंटेन रहता है. नाउ अगेन द हीट बजट एंड लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस. अब वाइड अर्थ डज नॉट ओवरहीट एट द इक्वेटर. वी जस्ट सॉ कि सबसे ज्यादा जो है रेज जो है डायरेक्ट सन रेज आर रिसीव्ड एट इक्वेटर. सो व्हाई इट डज नॉट ओवरहीट? अर्थ जो है वो रिसीव करता है मोर हीट इन द ट्रॉपिक्स देन एट द पोल्स, बट द प्लैनेट डज नॉट कीप हीटिंग अप. ऐसा नहीं है कि सिर्फ इक्वेटर पर ही जो है रेज आ रही है तो इट विल कंटिन्यूसली हीट अप और देन सडन देयर इज अ बिग ह्यूज फायर्स ऑल द टाइम एट इक्वेटर. बिकॉज जो है वो मेंटेन रखता है, लेट मी शो यू द डायग्राम, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. कुछ रीजंस जो है सरप्लस, द इक्वेटर इज द हीट सरप्लस रीजन एंड पोल्स आर द हीट डेफिसिट रीजन. तो बैलेंस मेंटेन करने के लिए क्या होता है कि वार्म एयर यहां से मूव करती है टुवर्ड पोलवर्ड्स, कोल्ड एयर जो है मूव करती है टुवर्ड इक्वेटर वर्ड्स, एंड ओशन करंट्स जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं हीट. अगर ओशन करंट पोल साइड से मूव कर रहे हैं टुवर्ड द इक्वेटर, दे विल ब्रिंग द कोल्ड वाटर विद इट, एंड इफ ओशन करंट्स आर मूविंग फ्रॉम इक्वेटर और ट्रॉपिक्स, दे विल ब्रिंग वार्म वाटर टू द पोल रीजन. एंड सन और वार्म एयर मूव करती है पोलवर्ड्स, कोल्ड एयर मूव करती है इक्वेटर वर्ड. तो सरप्लस हीट जोन जो है अर्थ का, इट्स बिटवीन 0 डिग्री टू 40 डिग्री होता है. दैट इज इक्वेटर एंड ट्रॉपिक्स में जो है ज्यादा हीट आती है, सरप्लस रीजन क्रिएट हो जाता है. और डेफिसिट रीजन इज 40 टू 90 डिग्री में होता है. हीट ट्रांसफर जो है यही है फाउंडेशन ऑफ ऑल द विंड सिस्टम्स, प्रेशर बेल्ट, मॉनसून्स, साइक्लोन्स और एवरीथिंग वी स्टडी इन द क्लाइमेटोलॉजी. हाउ वी डिस्ट्रीब्यूट द हीट. अगर हीट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो थिंक पोल रीजन्स पर कभी भी जो है हॉट वाटर या वार्म एयर नहीं पहुंच पाएगी टू बिकम द कोल्डेस्ट रीजन, एंड वहां पर जो है ज्यादा वो प्रोसेसेस भी नहीं होंगे, न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं होगा, इट विल अफेक्ट द बायोडाइवर्सिटी देयर. एंड ये सिमिलरली सेम केस विद द इक्वेटर. अगर इक्वेटर पर भी जो है कंटिन्यूस रेज आएगी और इम्बैलेंस क्रिएट होगा, that will also lead to impact on humans, biodiversity and everything. मैम वो डायग्राम एक बार थोड़ा, जी मैम, लाइक थोड़ा रफली एक बार समराइज कर दीजिएगा. ओके सी, जो इक्वेटर एंड 0 से 40 डिग्री जो एरिया है अर्थ का, वो हीट सरप्लस रीजन है. डायरेक्ट सनराइज लाइट आ रही है वहां पे, तो वहां पे बहुत ज्यादा ही सनलाइट आ जाती है बिकॉज डायरेक्ट रेज आती है, तो वहां पर एक्स्ट्रा हीट जो है वो है. अब अगर एक ही जगह पर कंटिन्यूसली, अगर आप अपने हाथ पर ही कंटिन्यूसली जो है लाइटर अगर पास में रखेंगे तो बीच में से एरिया जो आपका हाथ जलने लगेगा. सेम अगर इतनी ज्यादा जो है वार्म एयर रेज जो है इक्वेटर पर कंटिन्यूसली आएगी, तो इट मींस जो है इक्वेटर तो जो है इट विल बिकम अ फायर बबल. लेकिन वो ऐसे नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? क्योंकि क्या होता है कि पोल्स पर जो है स्लैंट रेज आती है, तो वहां पे हीट डेफिशिएंट रीजन है. इसका मतलब वहां की तो बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जानी चाहिए, पूरा आइस पूरा कवर हो जाएगा आइस से, लेकिन वैसा भी नहीं होता है. वहां पर भी बायोडाइवर्सिटीज है, पेंगुइन, पोलार बियर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बहुत कुछ है. तो ये किस तरीके से पॉसिबल है? इट्स पॉसिबल बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द हीट. हीट जो है एक ही जगह पर नहीं होती है, तो अर्थ जो है वो एक हीट बैलेंस जो है मेंटेन रखता है ना. वो इसको किस तरीके से मैनेज करता है? अब क्या होता है, वार्म एयर, यहाँ पर सरप्लस रीजन है तो यहाँ पर वार्म एयर होगी, यहाँ से वार्म एयर मूव करती है टुवर्ड
पोल्स एंड कोल्ड एयर जो है पोलर रीजन से ये मूव करती है टुवर्ड द इक्वेटर वर्ड। अब और ओशन करंट्स जो है वो भी रिडिस्ट्रीब्यूट करते हैं हीट को। अगर ओशन करंट्स जो है दे आर फ्लोइंग फ्रॉम पोल से इक्वेटर की तरफ, तो वो पोल से कोल्ड वाटर लेके आएंगे इक्वेटर साइड में, और अगर दे आर फ्लोइंग फ्रॉम इक्वेटर या ट्रॉपिक से पोल्स की तरफ, तो दैट विल ब्रिंग वार्म वाटर फ्रॉम दैट रीजन टू द पोलर रीजन। तो इसकी वजह से हीट जो है बैलेंस रहती है ऑन द अर्थ सरफेस। समझ गया मैम, समझ गया। Okay. Okay. Next is some वर्ल्ड टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। फ्यू वेरी सिंपल रूल्स। टेम्परेचर डिक्रीज करता है इक्वेटर टू पोल्स। इक्वेटर से आप जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे टुवर्ड द पोल्स, टेम्परेचर विल डिक्रीज। देन लैंड हैज हायर रेंज देन वाटर। टेम्परेचर का जो है हाई रेंज आपको देखने को मिलेगा ऑन लैंड, बिकॉज वाटर जो है इट कूल्स डाउन एंड वार्म्स वेरी स्लोली, एंड लैंड कूल्स डाउन एंड वार्म्स वेरी क्विकली। तो ज्यादा टेम्परेचर वेरिएशंस कैन बी सीन ऑन द लैंड। Now, ocean currents जो है they distort isotherms. Isotherms are nothing but the lines joining the place of equal temperature. अब अगर इस रीजन में पूरा जो है मान लो this region has equal temperature. So isotherms, these are the line joining equal टेम्परेचर रेंजेस। अब यहाँ पर जो है ओशन करंट फ्लो कर रहा है, अगर यहाँ पर ये वार्म रीजन है और कोल्ड ओशन करंट आ रहा है, तो दैट विल डिस्टॉर्ट द आइसोथर्म पैटर्न। वार्म करंट जो है इट बेंड आइसोथर्म पोलवर्ड बैंड करता है, एंड कोल्ड वाटर करंट्स जो है बैंड करता है इसको इक्वेटर वर्ड। विल डिस्कस इट इन वेरी डिटेल्ड मैनर इन ओशनोग्राफी। अभी के लिए बस इतना समझ लेते हैं कि आइसोथर्म्स दैट इज टेम्परेचर को, सेम टेम्परेचर को कनेक्ट करने वाली लाइंस जो है डिस्टॉर्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ द ओशन करंट्स। नेक्स्ट इज हाई एनुअल रेंजेस जो है वो देखने को मिल सकती है इन द साइबेरिया एंड नॉर्थन कनाडा जैसे रीजन में, और लो एनुअल रेंज यानी कि ज्यादा चेंजेस वेरिएशन होंगे नहीं होंगे वो इक्वेटोरियल ओशंस में देख सकते हैं। देन वर्ल्ड टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, इसके कुछ रीजंस क्या हो सकते हैं। इट हैपेंस अलोंग लैटिट्यूड दैट इज डिक्रीजेस फ्रॉम पोल टू इक्वेटर। इट्स हायर इन कॉन्टिनेंटल इंटीरियर्स जैसे साइबेरिया नॉर्थ कनाडा में, एंड इट्स लोअर इन द मैरीटाइम रीजन्स लाइक इक्वेटोरियल ओशंस में। आइसोथर्म हो गया। नाउ द इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। इस इमेज से क्लियर हो जाएगा व्हाट इज टेम्परेचर इन्वर्जन। सो इट्स एन एक्सेप्शन टू द नॉर्मल लैप्स रेट। यूजुअली लैप्स रेट में क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीजेस विद लैटिट्यूड दैट इज 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर। टेम्परेचर जो है डिक्रीज होता है। सो इस तरीके से नॉर्मल कंडीशन में टेम्परेचर राइज कर रहा है, वार्मर एयर, देन देयर इज कूलर एयर एंड देन कोल्ड एयर, राइट। लेकिन इन्वर्जन में क्या होता है कि कोल्ड एयर जो है इट गेट सेटल नियर ग्राउंड। इट मीन्स वार्म एयर जो है वो राइज करती है अबव इट, एंड देन देयर इज कोल्ड एयर अबव इट। तो यहाँ पर जो है टेम्परेचर जो है इस एरिया में वो एयर राइज और सेटल डाउन की वजह से बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। अब इन्वर्जन जो है कब होता है, जब काम क्लियर नाइट्स होती हैं, वैली रीजन्स होते हैं, कोल्ड एयर ड्रेनेज होती है, एयर साइक्लोनिक कंडीशंस सॉरी एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस होती है, तब जो है ये इन्वर्जन ऑकर करता है। सो इसमें कोल्ड एयर इट सेटल नियर द ग्राउंड, वार्म एयर स्टेज अबव इट, दिस इज द इन्वर्जन। Yes, ma'am. Understood this one. Okay. You can draw this diagram as well. It will help you in easy understanding. So, ma'am, when the skies are calm, like there is no turbulence or anything, then Mhm. the core Yes. this temperature inversion happens. Like the warm Yes, air yes. settles in between. Hmm. क्लियर स्काइज, काम विंड्स होनी चाहिए, देयर शुड बी नो मिक्सिंग ऑफ द एयर। अगर एयर की मिक्सिंग नहीं होगी तभी जो कूल एयर है वो नीचे सेटल होगी। देन लॉन्ग एंड कोल्ड नाइट्स होनी चाहिए। इसका मतलब व्हाई वी नीड कोल्ड एंड लॉन्ग नाइट्स, सो दैट देयर विल बी मोर टाइम फॉर लैंड टू रेडिएट हीट।
The next is the important processes which affect the temperature. Scattering. Scattering is the like dust and water droplets वो scatter करते हैं sunlight को, जिसकी वजह से blue sky and red sunsets हमें देखने को मिलते हैं. Then absorption होता है. We discussed this yesterday as well. Ozone absorb कर लेता है UV rays को. CO2 and water vapor भी absorb करती है infrared radiations को. Now reflection होता है. Clouds and surface albedo effect create करते हैं. वो हो गया. देन ट्रांसमिशन होता है. कुछ रेडिएशन पास करती हैं थ्रू एटमॉस्फेयर बिना किसी चेंजेस के. सो इंसोलेशन इट हीट्स अप द अर्थ. अर्थ रेडिएट करता है हीट को बैक एंड द बैलेंस बिटवीन द इनकमिंग एंड द आउटगोइंग रेडिएशन इज द हीट बजट. लैटिट्यूड लैंड वाटर कॉन्ट्रास्ट एंड विंड जो है शेप करते हैं टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को. हीट इम्बैलेंसेस ड्राइव करते हैं ग्लोबल सर्कुलेशन को. नाउ दिस इज द कोर ऑफ द क्लाइमेटोलॉजी. अब इसके बाद जितने भी टॉपिक्स आएंगे वेदर इट्स मॉनसून, विंड, साइक्लोन्स, जेट स्ट्रीम्स, दे स्टेम्स फ्रॉम दिस फाउंडेशन कि रेडिएशन कितना है, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन कितना होता है एंड हीट बजट कैसे मेंटेन्ड है. So insolation is this is a quick revision table I have made for easy revision. So insolation is the incoming shortwave radiation. Albedo is 31%. It's the global average. Earth absorb करता है 69% of the incoming radiation. Lapse rate is 6.5 degrees Celsius per 1000 meter. Greenhouse gases कौन सी हैं? H2O, CO2, CH4, N2O, O3 and chlorofluorocarbons. हीट पर जो बैलेंस कैसे होता है? सरप्लस है हीट ट्रॉपिक्स में एंड डेफिसिट है पोल्स में एंड देन उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है. कोल्ड करंट्स जो हैं लोअर टेम्परेचर में होते हैं, दैट इज पेरू करंट जैसे हो गया, एंड वार्म करंट्स जो है टेम्परेचर को रेज कर देते हैं जैसे गल्फ स्ट्रीम. So this is it for today. इन टॉपिक्स में किसी को कोई डाउट है और एनी क्वेश्चंस सो दे कैन आस्क. Ma'am, you said in the previous class we also discuss one mains question. Oh yes. I didn't frame it today. Okay. Sorry. In the next class, we'll discuss 2 questions. Don't worry. Okay, ma'am. And one more thing, ma'am. How can we relate this question with the current aspects? Like, is there any relevancy in the climate change or globalization? Like, all these things impact on this? Yes. इसको अभी ग्रीन हाउस गैस जैसे हमने पढ़ा. क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ऑन एनवायरनमेंट एज वेल. अभी ग्रीन हाउस की वजह से क्या इफेक्ट हो रहा है, कैसे राइज कर रहा है, उसका प्रोसेस क्या है. तो यू कैन डायरेक्टली स्टेट कि ग्रीन हाउस गैसेस में ये गैसेस इन्वॉल्व हैं एंड इट इज लाइक अ ब्लैंकेट शीट. और किस तरीके से जो है CO2 के राइज की वजह से उसमें इम्बैलेंस हो रहा है. डायरेक्ट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ऑन इंसोलेशन. Number of PYQs in prelims, a few questions were asked on insolation. There can be direct questions on factors affecting controlling insolation. Then question can be asked on the heat budget of the earth. Then this surplus and deficit region कि अर्थ जो बैलेंस किस तरीके से मेंटेन रखता है. This is also very important. So question can be asked from it. Now prelims question can be framed on these definitions on conduction, convection and insolation. मैम अभी जो करंट अफेयर है मैम उसमें मोस्टली एक न्यूज आती है कि मैम की कार्बन टैक्स के ऊपर जो यू का है मैम, तो उसको इस टॉपिक से इंटरलिंक करके क्वेश्चन तो बन सकता है मैम. लाइक कैसे? Can you please explain? मैम लाइक आई जस्ट हैड अ थॉट, तो मैं इसलिए आपको जस्ट कन्वे कर दिया. लाइक इट कुड बी लाइक हाउ इट कुड बी, मतलब कि मेंस में ऐसा क्वेश्चन कैसे बन सकता है. लाइक कार्बन टैक्स इज लाइक सिंपली तब लगाते हैं व्हेन यू एमिट कार्बन डाइऑक्साइड.
ठीक है, इट्स लाइक अ फीस विच इज इम्पोज्ड ऑन इंडस्ट्रीज दैट emit कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली, सो दैट्स द कार्बन टैक्स. नाउ ये जो है मोस्टली इट्स रिलेटेड टू कार्बन पोल्यूशन. सो इस टॉपिक से जो है इंसोलेशन हीट बजट से ये इनडायरेक्टली लिंक्ड है, इट्स डायरेक्टली लिंक्ड टू दी ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट्स एंड ग्लोबल वार्मिंग. तो उससे जो है डायरेक्ट क्वेश्चन रेस में आ सकता है. एंड इनडायरेक्टली इफ यू वांट टू मेक योर आंसर्स और ज्यादा उसमें कॉम्प्रिहेंसिव बनाना है, तो यू कैन राइट दैट CO2 एब्जॉर्ब्स लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशंस फ्रॉम दिस टॉपिक. So this is the same outgoing terrestrial radiation that the earth tries to release at night, एंड वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो ज्यादा ही ट्रैप करता है. तो इफ यू हैव द क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक, अगर मेरे पास इसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आई एम गोना सिंपली राइट इन द एग्जाम कि CO2 के इंक्रीज की वजह से ऐसे होता है. नाउ मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ इसको इन द एग्जाम इफ आई हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक कि CO2 एब्जॉर्ब कर लेता है लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशंस एंड कैन इवन एक्सप्लेन इट इन वेरी ब्रीफ मैनर. So this is how you can link it. जी मैम. और टेम्परेचर इन्वर्जन से इसको कनेक्ट कर सकते हैं. अगर ज्यादा CO2 होगा और ज्यादा पोल्यूटेंट्स भी होंगे, तो उससे टेम्परेचर इन्वर्जन भी जो है स्ट्रॉन्ग हो सकता है. कोल्ड एयर जो है वो नीचे ही ट्रैप हो जाएगी. नाउ पॉल्यूटेंट्स एंड स्मॉग जो है वो ग्राउंड लेवल पर ही रहेंगे. हेल्थ इंपैक्ट्स काफी ज्यादा खराब हो जाएंगे. इट कैन बी सीन इन दिल्ली विंटर्स कि ज्यादा स्ट्रॉन्गर टेम्परेचर इन्वर्जन को देखा जा सकता है. आई हैव टू गेट थ्रू दिस वंस फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग. इसका जो है कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आई विल पोस्ट इन द ग्रुप कि टेम्परेचर इन्वर्जन पॉल्यूशन को कैसे इंपैक्ट करता है, दिल्ली विंटर्स को कैसे इंपैक्ट करता है. तो यू कैन यूज द दिल्ली विंटर्स एज अ केस स्टडी इन योर आंसर्स एज वेल. यस मैम, लाइक पॉइंट्स में यूज कर सकते हैं मैम, लाइक उसको एक्सप्लेन राइट करने के राइट लिए. Yes, as a case study you can use it. And Delhi winters तो AQI pollution ये तो hot topics है and every year there is the same story. तो इसको तो use किया जा सकता है as a case study or example. I'll add that case study in these notes as well so that you can directly use in the exams. Any other questions? No ma'am, not from my side. Okay. If there are no questions, we will wrap up this class. You can go through these notes and diagrams. If we'll go through these diagrams and तब revise करेंगे, so that will help you in retaining it for a long period of time. So geography के लिए it's important कि आप खुद से डायग्राम बना के देखें and डायग्राम के थ्रू उस कॉन्सेप्ट को क्लियर समझे भी. That's why I add a number of diagrams in the geography PDF. Okay, everyone, then this is it. See you tomorrow in the next Ma'am, I class. had some doubts regarding an exam called CAPF मैम. इसमें ऐसे वगैरह काफी कुछ पूछते हैं मैम, तो एक बार आपसे बात हो सकती है मैम उस मैटर पे? On CAPF essay writing. जी मैम, लाइक उसमें there are a lot of writing areas, so like Okay. can I call you after the Yeah. class or something? हाँ, of course. Okay ma'am, thank you. Okay. मैम एक्सक्यूज मी, Yes, Namrata. मैम वही वो जो हिंदू का एनालिसिस नहीं आ रहा है Okay. ग्रुप में. हम लोग खुद से नहीं बना पाते हैं क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है. हम लोग टोटली उस Right. मतलब ग्रुप में डिपेंड हो जाते हैं कि आप लोग बनाए और हम उसको एनालाइज कर रहे हैं. मतलब जो Right. एनालाइज्ड होता है वो बहुत ही हेल्पफुल रहता है मैम. हाइलाइटेड पार्ट जो है. Yes, हम उसको हाईलाइट करके एनालाइज करके आपको देते हैं to make your preparation more simplified and more comprehensive. I will acknowledge to the team कि उसका analysis क्यों ग्रुप में नहीं आ रहा. हाँ वो Or to 2-3 post it दिन से at नहीं आ least रहा. तो possible. थैंक यू सो मच मैडम, आपका क्लास बहुत अच्छा था. Welcome. Thank you. Thank you, ma'am.
थैंक यू, थैंक यू। चलो बाय एवरीवन। बाय मैडम। मैडम आप कौन से टाइम में मतलब फ्री रहते हैं अगर कोई डाउट क्लियर हो करना करना हो तो? अराउंड 7 to 8। ओके, थैंक यू मैडम, वो टाइम मैं भी फ्री रहती हूँ। थैंक हाँ, ओके। कोई भी डाउट्स हो तो यू कैन आस्क एनी टाइम। यू। ओके मैम। ओके, ग्रुप में बाय जो एवरीवन। व्हाट्सएप नंबर है वही नंबर को कांटेक्ट कर यस, सकते हैं? यस, यस। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। ओके, वेलकम। बाय। बाय मैम, थैंक यू सो मच।